नमस्ते स्टूडेंट्स, खुश रहो बेटियों। IJVN डॉक्टर नरेंद्र सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ शल्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। In previous class we discussed about anatomy of stomach. Today we will discuss about pyloric stenosis. What mean by pyloric stenosis? Stenosis means narrowing of the opening. Pyloric stenosis or pylorostenosis is narrowing of the opening from the stomach to first part of small intestine known as duodenum. The pylorus means gate. It means pyloric stenosis related to the pylorus part of the sternum. This pic is showing the pyloric stenosis. This is the stomach and cellular tissue. This is narrowed. Narrowed means stenosis. Stenosed pylorus. This is the first part of intestine is called duodenum. This narrowing is called pyloric stenosis. Okay, students. What is the causes of stenosis? Now we will read. This is showing the normal physiology of stomach. Due to enlargement or hypertrophy of the muscle surrounding the opening, which spasm when the stomach empties. स्टेनोसिस कब होता है? जब स्टमक खाली हो और जो मसल्स है उसके स्टमक की, उसमें स्पाज्म हो जाता है, उस वजह से वहाँ पे मसल्स में हाइपरट्रोफिक हो जाती है। दिस कंडीशन कॉज सीवियर प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियरस वोमिटिंग। उसकी वजह से वहाँ पे जो ओपनिंग है वो नैरो हो जाती है। दिस कंडीशन कॉज सीवियर प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियरस वोमिटिंग। इसलिए इसमें जो स्टमक के अंदर रिफ्लेक्स बनता है और रिफ्लेक्स से वोमिटस मटेरियल बाहर आता है, बट उस वोमिटस मटेरियल में बाइल कम होता है, बाइल नहीं होता है, क्योंकि यूरिनम से स्टमक वाला पार्ट ब्लॉक है। इस वजह से इट most often occurs in the first few months of life, means early age. It more specifically labeled as infantile hypertrophic pyloric stenosis. This one is showing infantile hypertrophic pyloric stenosis. The thickened pylorus is felt classically as an olive-shaped mass in the middle part of or right upper quadrant of the infant's abdomen. Right upper quadrant of the infant's abdomen. Pyloric stenosis also occurs in adults where the cause is usually a narrowed pylorus due to scarring from chronic peptic ulceration. Pyloric stenosis also occurs in adults where the cause is usually a narrowed pylorus due to scarring from chronic peptic ulceration. कोई भी किसी तरह के पेप्टिक अल्सर की वजह से वहाँ पे कोई स्केयर हो जाए, स्कार फॉर्मेशन हो जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, तो उस वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस बनता है। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज डिफाइंड एज नैरोइंग स्टेनोसिस ऑफ द outlet of the stomach so that food cannot pass easily from it into the duodenum. Pyloric stenosis result in feeding problem and projectile movement. तो उसकी वजह से पाइलोरिक स्टेनोसिस की वजह से जो स्टमक की ओपनिंग है ड्यूडेनम वाली वो नैरो हो जाती है, तो जो फीडिंग जो फूड मटेरियल होता है वो स्टमक से इंटेस्टाइन में नहीं जा पाता और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो स्टमक में ही पड़ा रहता है। तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स होता है, खाना नीचे जाता है, बट वहाँ नीचे ओपनिंग बंद रहती है, तो खाना वापस स्टमक से लेके, जैसे आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं कि खाना इस एसोफेगस से आ रहा है, वो स्टमक से होता हुआ
ड्यूडेनम में जा रहा है, बट ड्यूडेनम वाला ये पायलो स्फिंक्टर में स्पाज्म हो गया, तो यहाँ से नेरोइंग होगी, तो ये ऊपर वाला स्टमक वाला खाना वापस रिफ्लेक्स होके ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसोफेगस की तरफ। तो उसकी वजह से क्या होगा, फीडिंग प्रॉब्लम्स होगी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होगी, वो नॉन ब्यूबुलस होगी। These are the incidents of pyelonephrosis commonly in the first born male child. Most common cause of laparotomy for 1 year, age 3 weeks to 3 months. Child of those parents who with pyelonephrosis means it is the family condition. Also, causes and risk factors. Idiopathic cause: nitrous oxide synthesis deficiency, nerve cell theory means ganglion cell theory. Sex pyelonephrosis is seen more often in boys, especially first male born child than in girls. Premature pyelonephrosis is more common in babies born prematurely than in full-term babies. Family history. Studies found higher rates of this disorder among certain families. Pyelonephrosis develop in about 20% of male descendants and 10% of female descendants of mothers who had the condition. Smoking pregnancy, the bearer can nearly double the risk of pyloric stenosis. Early antibiotic use. Babies given certain antibiotics in the first weeks of life. Example, it is example erythromycin to treat whooping cough, for example, have an increased risk of pyloric stenosis. In addition, babies born to mothers who took certain antibiotics in the late pregnancy also may have an increased risk of pyloric stenosis. Bottle feeding. Some studies suggest that bottle feeding rather than breastfeeding can the risk of pyloric stenosis. In adult, it can occur due to history of pyloric peptic ulcer in pylorus region and hypertrophic region in muscle scleropylosis. Now, pathophysiology. Pathophysiology and other clinical features and treatment will discuss in next class. So, students, that all. This is all about mm, pyloric stenosis definition, then causes, etiology, and all about this. Pathophysiology and other topics we will discuss in tomorrow class. This session is powered by Digital Session 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Hope students, you are satisfied. If you have any queries or doubt, please comment in please mention in comment box. I will resolve it soon. Thank you.